Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine, students. Yes, beta. Today we are going to start next half of chapter number 4, My Experiments with Truth, written by Mohandas Karamchand Gandhi. Yes, students, as you all know, beta, that Gandhiji was a man of truth. He was highly impressed by the story of Harishchandra, and from the play Harishchandra, students, Gandhiji learned the lesson of truthfulness. And students, another play, that is Sharvana Pitribhakti Natka. It also impressed him so much that he decided to serve his parents like Sharvana. Now students, let's read the next half of the chapter. So students, let's begin with the chapter first of all. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. Yes, students, who was Dorabji Jimmy? The headmaster. Okay, and students, why was he popular among the boys? Because students, he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. Now beta, he had made gymnastics and cricket compulsory, and I disliked both. Who disliked both, students? Gymnastics and cricket? गांधी जी को बेटा जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट दोनों ही पसंद नहीं थे. I never took part in any exercise before they were made compulsory. एंड बेटा गांधी जी ने क्या बताया कि उन्होंने जो है किसी भी एक्सरसाइज में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था जब तक उनको कंपल्सरी नहीं कर दिया गया था. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. बेटा उन्हें पहले क्या लगता था दैट कि जिम्नास्टिक्स और एजुकेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद द एजुकेशन. टुडे आई नो that physical training is as important as mental training. But students, afterwards, he realized that physical training is as important as mental training. And the reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. Yes, students, Gandhiji disliked games, or we can say gymnastics, because students, he wanted to serve his father. Okay, and as soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. Now it happened that one Saturday I had to go home. I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. Yes, beta, Gandhiji considered gymnastics and physical exercise as useless, as he always thought that it had nothing to do with the studies. But afterwards, students, he realized that physical exercise was as important as mental exercise. I had no watch, and the clouds deceived me. When I reached the school, all the boys had already left. The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. बेटा वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ रेन वी कैन से. और बेटा जब उनके हेडमास्टर ने उनसे रीज़न पूछा तो उन्हें सारी बात बता दी. He refused to believe me. But students, Mr. Dorabji Jimmy was not ready to believe him. I was convicted of lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? अब गांधी जी ने सोचा कि मैं अपनी इनोसेंस को कैसे प्रूव करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था. There was no way, but अब कोई भी तरीका नहीं था. I learned that a man of truth must also be a man of care. और तब उन्होंने बेटा इस इंसिडेंट से क्या सीखा? That a man of truth must also be a man of care. And this was the first and last instance of my carelessness in school. और ये स्टूडेंट्स उनकी केयरलेसनेस का लास्ट और फर्स्ट इंसिडेंट था जो उन्होंने ऐसा किया.
Yes, beta, Gandhiji considered gymnastics and physical exercise as useless, as he always thought that it had nothing to do with the studies. But students, afterwards, he realized that physical exercise was as important as mental exercise. Once students, Mahatma Gandhi had to go for gymnastics to the school. But students, as soon as he came out, the rain started. And when he reached his school students, then all the boys had already left. Then students, he told the teacher the reason. Okay, he told Mr. Dorabji Jimmy the reason for his being late. But students, Mr. Dorabji Jimmy refused to accept the reason. And students, it was then that he realized that a man of truth should be a man of care. But there is another neglect for which I am still paying the penalty. I don't know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. Yes, students, Gandhi thought that good handwriting was not a necessary part of education. उन्हें क्या लगता था स्टूडेंट्स कि गुड हैंडराइटिंग जो है एजुकेशन का एक नेसेसरी पार्ट नहीं है. बट स्टूडेंट्स उन्हें कब तक लगा? Until he went to England. And students, when later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men, I was ashamed of myself. Ashamed का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? अपने ऊपर शर्म आना, गिल्टी महसूस करना. ओके, एंड रिपेंटेड, और उन्हें पछतावा हुआ ऑफ माई निगलेक्ट, कि उन्होंने इस चीज़ को निगलेक्ट क्यों किया अपनी हैंड राइटिंग को. I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. Students, bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. I tried later to improve mine. उन्होंने बेटा बाद में बहुत कोशिश की इसको इम्प्रूव करने की, but it was too late, students. I could never repair the neglect of my youth. Yes, students, when Gandhiji saw the beautiful handwriting of the lawyers and young men in South Africa, students, then he compared his handwriting with them. And students, after that, he felt ashamed of himself because of bad handwriting. Okay, students. Students, there is another incident which I must share. I committed a theft when I was 15. स्टूडेंट्स, जब महात्मा गांधी जी 15 ईयर्स के थे, ही कमिटेड अ थेफ्ट, उन्होंने एक चोरी की. आई हैड रन इनटू अ डेप्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़. और क्यों की बेटा? टू क्लियर द डेप्ट ऑफ 25 रुपीज़. उनके पास बेटा डेप्ट थी, उधार थी 25 रुपीज़ की, उसे ही क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने क्या की? थेफ्ट. माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड. आर्मलेट क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइक ब्रेसलेट. ओके, my brother had on his arm an armlet of solid gold, and I stole a bit of gold out of it, and the debt was cleared. उन्होंने क्या किया बेटा? अपने ब्रदर के आर्मलेट से थोड़ा सा गोल्ड चुरा लिया और उसको अपने डेप्ट को क्लियर कर लिया. बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर. बट स्टूडेंट्स, उन्होंने ऐसा कर तो दिया, बट अब वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिया. आई रिसोल्व्ड नेवर टू स्टील अगेन. और उन्होंने बेटा प्रॉमिस किया अपने आप से दैट आई विल नेवर स्टील अगेन, कि वो फ्यूचर में दोबारा कभी भी चोरी नहीं करेंगे. आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस. उन्होंने अपना माइंड ये भी बनाया कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें. कन्फेस का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, मान लेना. ओके, माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर, बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक. उन्होंने कोशिश की कि अपने फादर को सब कुछ बता दें बेटा, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कैसे ऐसी बात बताएं कि उन्होंने चोरी करी है. बेटा लिसन, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम एक बार डरते हैं ना स्टूडेंट्स कि हम अपने पापा को या मम्मा को एक बात कैसे बताएं, है ना? तो सेम थिंग हैपन टू गांधी जी. बट स्टूडेंट्स, सी व्हाट हैपन. आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम. बेटा उन्हें जो है डर ये नहीं था कि उनके फादर जो उन्हें पिटाई करेंगे, उनका पनिशमेंट देंगे. नोट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी. आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम. मुझे तो सिर्फ इन चीज़ों का डर था कि जो परेशानी मैंने अपने फादर को दी थी उनसे उन्हें जो है उन्हें कैसा लगेगा ये सब कुछ जानकर कि मैंने चोरी करी है. उनके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगी, वो बहुत परेशान हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स,
I decided at last to write out the confession. बेटा लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या डिसाइड किया? टू राइट आउट द कन्फेशन, कि नहीं वो अपने पापा को, अपने फादर को सब कुछ बता देंगे. एंड स्टूडेंट्स वी शुड ऑल्सो डू द सेम, कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है बेटा, हो सकता है हम डर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को लेके, बट स्टूडेंट्स हमें अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहिए. ओके. आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन. इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट, उन्होंने जो लेटर लिखा बेटा, जो नोट लिखा अपने फादर को, उसमें सिर्फ उन्होंने अपनी गलती ही नहीं एक्सेप्ट करी, बट ऑल्सो आस्क्ड एडिकेट पनिशमेंट फॉर इट. उन्होंने पनिशमेंट के लिए भी बोला कि आपको जो भी सही पनिशमेंट लगे पापा वो आप मुझे दे सकते हैं. आई ऑल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और उन्होंने अपने फादर को ये भी प्रॉमिस करा दैट वो कभी भी लाइफ में दोबारा स्टील नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे. विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथों से, ट्रेम्बलिंग शेकिंग हैंड से, आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर. उन्होंने वो कन्फेशन लेटर बेटा अपने फादर को दे दिया. ही रेड इट, उनके फादर ने उसे रीड करा बेटा, एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर. और बेटा उनके फादर की आई से जो है पर्ल ड्रॉप्स की तरह जो है आंसू आने लग गए, जिससे वो पेपर जो है बहुत गीला हो गया. A clean confession combined with the promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. And this incident for me was an object lesson in ahimsa. Yes students, गांधी जी ने क्या सीखा कि हमें जो है क्लीन कन्फेशन मीन्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए विद अ प्रॉमिस दैट वी विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक again. Okay students, and students as you all know that Gandhi ji always thought that good handwriting had nothing to do with the education, but students when he went to South Africa he realized that bad handwriting was considered as a sign of imperfect education, and students he tried to improve. And students the other mistake was when he stole a bit of gold from his brother's armlet to clear his debt of 25 rupees. He was always very guilty and wanted to confess it, but he was scared to speak it in front of his father. So students, he wrote down a note, and in which he confessed everything and demanded punishment for what he had done. And students, when his father saw the note, और students जब उनके father इस note को देखा, confession letter को, he had tears in his eyes, तो उनकी आंखें जो है बेटा आंसुओं से भर गई, pearl drops like, but he forgave him. But students, उनके father ने उन्हें कोई punishment नहीं दी, he forgave him. And students, गांधी जी learned the lesson of ahimsa through this incident. Yes students, so we should also learn many lessons from Gandhiji's autobiography, as how to be punctual, obedient, truthful, careful, and students the most important that one must confess one's guilt, one must accept one's mistakes and never be afraid of punishment. Okay students, I hope all of you have understood well now. Now students, read the chapter once again and try to understand. Okay students, and students try exercise of this chapter. Okay students, that's all for today beta. Thanks and have a nice day. Bye bye beta.